So here, let us see. So let us see here the syllabus of this research aptitude. Now, this syllabus here contains the research, its meaning, its type, its characteristics. Then the methods of research, which are the methods like experimental, descriptive, historical, qualitative, quantitative methods. Then this is one of the most important, that is the steps of research. Here it also includes the thesis and article writing, the format and the style of referencing, applications of information and communication technology in our research, and some research ethics. So let us see, we will see this everything one by one. Okay. Now, first, before we will start, we will see some MCQs of this research aptitude, which is generally appear in our set exam, even in our PET exam, even in our net exam. Okay. Now let us see here. So you can see in both the languages. First of all, I would like to ask you which language is comfortable, English, Marathi, or Hindi? Yeah, everyone. Is it comfortable with English and Marathi both? Okay, let us consider the English is okay, comfortable. Now here you can see the types of question it is asked. The most essential quality for the researcher is, okay. So this is very general question. You can see this. What is required? Punctuality, intelligence, a genuine research in interest in research, and mastery over own subject. So when one can get this, that this all are very important. Okay. But while writing the proper option, we have to be very positive for this question. If our approach for the positive, if our approach for this positive, for this question, then we will get the proper answer. So you can see that which one is the correct answer here. Then it will be a genuine interest in our research. Unless and until you will have no interest in research, you cannot get the different ideas. You will not fight for getting that answer. We will not find out getting the solution for that one. So here what is required, the genuine interest in research is must and must. So the main thing which I want to tell you, that when you are really interested in acquiring research, or you want to do your PhD or anything, so you first require your genuine interest. Okay. So definitely when you will start working regarding that portion, so you will start getting आप अपना उतना ही इंटरेस्ट से आप उतना ही आप बुक सर्च करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू want to do a set exam, or we want to do a net exam, suppose let us consider we will appear for them. So what we will do, we will find out the syllabus, then what types of questions are asked from each unit. Okay, that we will see. Then what types of questions are repeatedly asked in last 5 years papers. Okay, that we will see. And every year there is something new. Okay. uh, yeah, so every year there is something new. Very good, very good. So I think Dote has done it, na? Very good. So every year there is something new that you have to see. What is new in each and every year's paper, that you have to see. Okay. So here you can see now, just now that Dote has given us a correct answer. Okay. So yeah, one can get the number of the options when you are really interested in this. Okay. Now let us see here also the recording of the reflective notes in a qualitative research is called memoing. So we have to see this one. Okay. Now the next one, I think it is printed ना now ये क्या हो गया? ये उसमें आ गया क्या स्क्रीन में? अभी मैं एवरी टाइम स्क्रीन में मिस करूंगी. इसको आप रिमूव कर सकते हैं क्या? Can you remove this one? Dote, can you remove this one?
Can you remove this mark? Whosoever had done it. Mr. Dote, please remove this. Hello. Otherwise, it will come in each and every slide, na? That's why I'm asking. मोरे सर सर हाँ, ऑप्शन नहीं आ रहा है रिमूव करने। मेरे इसमें भी नहीं है सर, वहां से हुआ है तो यहाँ से नहीं होता है। आपने उनको होस्ट किया था क्या सर? Mihir can do it. Mihir Dote, please, can you remove it? होस्ट किया था क्या सर आपने उनको? उनको होस्ट नहीं किया है सर, मैं होस्ट नहीं किया हुआ है। कोई मैडम भी एक कर बार फिर से क्लोज करके नहीं क्या? Shall I stop sharing and then we'll do it? ओके ओके यस मैम। हाँ, गुड। अभी ये नहीं दिख रहा है ना इसमें, दोनों इसमें? ठीक है। So one can see here the number of questions, what are the types of questions are asked. So here you can see the types of questions on variable, then types of questions on the testing. Screen is, sorry ma'am, screen is not visible ma'am. Not visible? Yes ma'am. Visible now? Screen is visible? No ma'am. विजिबल सर दिसत आहे का दिसते तुम्हाला? हाँ दिसते Yes, sir, it is visible to us. Okay. Sorry ma'am, sorry. It's so research paper is based on what type of data? Okay. So here also some history type of question, the Socrates, then experimental researches are aimed to be. Okay. So you can see the various types of questions and one can get it from the previous year question papers. Okay. Now let us see here what is mean by research. Okay. Now the word itself, it is combined, it is made up of the two words, re and search. Okay, so we are not doing any discovery type of research. Okay, here what we are doing, whatever the search made by the previous people, okay, and they left the question only that up to that portion and we are making it to ahead of that. यानी जो भी उन्होंने सर्च किया है, जो भी उन्होंने वहां तक उनका रिसर्च का पोर्शन हो चुका है, जहां पे उनका क्वेश्चन स्टॉप हो चुका है और उन्होंने एक एग्जिस्ट क्वेश्चन दे दिया है and we will take that question to go ahead. So this is what the research. Okay, now let us see here what is meant by research. So here the logical and the systematic search for new and useful information on a particular topic is also research. Here we can say that it is a systematic inquiry that provides information to guide and managerial decision. Now, for doing a research, we always require a planning. Then acquire, we have to acquire that plan, analyze it, and resubmitting the relevant data and information. So, from getting this, we will get the insight what we have to do, because the problem is very huge. Okay, the problem is very huge. We have to first find out the problem, and that is a very difficult topic. We can say that we have to find out the we have to find out that topic, or we can say the problem. Okay, and after investigating, so we have to find out its solution by a scientific and the social ways. Okay, so that whatever the objective and the systematic analysis will be done. Now let us see here some ways. So here how and what essentially summarizes what is research, how it happens, what does it do, how will consumer react to the brand, and what must we do to increase our brand awareness. So let us consider these are some questions from a this how what, and this is very important actually to get the proper knowledge.
So here, when we say that here, that uh, we are doing any research, then we must first of all have to find out the objectives of the research. Okay. Now, when we are finding out the objective, that means what? We are discovering certain new facts. Okay. That means some new topics or some new technologies that we are discovering. At the same time, we are taking ahead that problem to that. So how to that after just stating this problem, we have to verify and test the important facts. Okay. Then analyze an event or process or the phenomenon to identify the cause and effect. Okay. What is meant by cause and effect? Now, generally, let us consider any example of the algebraic expression. Let us consider if I am saying x plus 2 is equals to y. Okay. So we know that x and y are the variables, right? X and y are the variables. We can vary their values. But we know that x is an independent variable, means we can vary the value of x. And due to varying the value of x, we will get the value of y, which is dependent on x, right? So x is a cause and y is a effect. Okay. So x plus 2 is equals to y. If we are taking this, so here x carries out the cause portion and whereas the y is the effect. So here we can define here the variables like x is a independent variable and y is a dependent variable. Okay. So these are the analyzing event or the process or the phenomenon to identify the cause and effect. Okay. Now, during doing this one, we have to develop some new scientific tools, concepts, and theories to solve and understand it. Okay. Now, let us consider those who are from the science background. So, if any problem statement is given to them, so now those who are from the physics department or from let us chemistry department or material science department, let us consider if any problem for the scientific problem is given to them. So what we will do, what they will do, they will first think over it, then they will find out some new scientific tools like what we have to do for taking out the, let us consider the luminescence. So they will first perform the phosphorus by preparing some chemicals. Then by combining these chemicals also, they will prepare that phosphor. Then how to determine that they are phosphor is produced or not? Then they will solve. They will send that phosphorus to the XRD and get it. We will get. They will get the resemblance with the ICDD. Okay. So here some scientific tools are used. That is how to determine the XRD. Okay. And after using this XRD, they will find out some concept and they will relate it with the theories and they will solve that. And here they can understand the things. So this is the objective of the research. The next one is to find out the solution to scientific, non-scientific and social problems. Okay, so not only for the science related, for the non-scientific and the social problems also, we have to find out the solutions and we have to overcome and solve the problems occurring our day-to-day life. Okay, so this is what the objective of the research, any type of research, whether it is related to social sciences or whether it is related to science. Okay, so these are the objectives of the research. Now, what are the features of the research? Now, research is not confined to science and technology only, as we have said it. It is also related with the languages, literature, history, sociology, it is a multidisciplinary. So we can say that it has a very vast area of research. So researchers has to be an active and diligent and systematic. So whenever, as we know that it is a very systematic process. Okay, so one has to be very systematic in that way. We have to plan for that and we have to be very actively, we have to perform it. Okay, now research identifies the process to inquire, to discover, to interpret and to revise the facts, event and behaviors and the theories. Okay, so here we have to first we have to inquire. Inquiry is the one of the most important portion or the part of the researchers. Why, what, how? Okay, so these will give you lot of answers while doing the research.
So this systematic research helps in applying the outcome of this research for the refinement of the knowledge in enhancing the quality of a human life and research and development. Okay, so systematic research is always important to out to find out this outcome of this refining of knowledge. So if suppose anyone will not do it by systematically, so what will happen if they have started with any other topic, like there is a broad map of a research. So if one will not go by that roadmap, let us consider that in that roadmap you must have already learned, or you must have already read somewhere that the literature review is the one of the important topic. So why the literature review should be done by every researcher? Because if we will not do a research literature, a review of this literature, then what we have, so that gap should be known to each and every researcher. So that's why we used to say that this systematic research is always helpful for getting the refined knowledge. Okay, now what should be the quality of a researcher? Now as we are from the those who are from the science department, they are very they are very known to it, because they have already performed so many experiments and all. And those who are pursuing their they are supposed to pursue their PhD, so they must have to acquire these qualities, because the nature of the researcher should be temperament that vibrate in a unison with the theme which what he is searching. That means what his knowledge means whatever his search should be in that unison, in that frequency of that both these should manage it should be maintained. Then truthfulness with the truthfulness of the nature. One cannot destroy the truthfulness just before your sake of getting the proper um, uh, proper getting answer. We must not have to disturb that the truthfulness of a nature. One should be very truthful to the our answers. Now here, which is more important and much more exciting, that what is sometimes known as a truthfulness and desire for accuracy of observation, precision of the statement. These are the very important point, that is the accuracy and precision of a statement. So what any suppose if any experiment is going on and one is not very attentive in that, so one will miss any point, and that will disturb the accuracy of that observation. So ultimately what will happen, the statement what he will get after the whole uh, experiment, that will not be precise. And for getting the accurate and the precise, he must have the desire, that so that one will be there for the whole. Let us consider in our science department, so one has to sometime wait some कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उनको बहुत बार रात रात भर उनके जो उनके कैरेक्टराइजेशन के लिए उनको रात भर वहां रुकना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही एक्यूरेटली वहां होना चाहिए, टेम्परेचर जो स्लो डाउन होना चाहिए उसको बराबर, उसके लिए वहां पे रुकना पड़ता है। बहुत बार ऐसे होता है। तो एंड एट द सेम टाइम अदर्स जो फैकल्टी है उनका माइंड कैसे अलर्ट होना चाहिए, इट शुड बी कीन एंड वॉचफुल टू नोटिस द चेंजेस and must have a keen eyes and mind to observe the unusual changes in the routine. So it's very important to notice each and every minute changes in their routine. So these are the qualities of the researchers. Now let us see here the types of the research and the characteristics. Now the types of research from the different point of views. Okay, now let us consider from the application point of view. So there are the two types of research, the fundamental, which is also known as a pure research, and the applied research. Then the next one is the objective. Now here in objective, you can see here the descriptive, then exploratory, then correlational and explanatory. So these are the four types of the types of research on the objective point of view.
And inquiry mode, it is a quantitative and qualitative type of research. So here you can see these are the types of the research from various point of view. Now the types of research are, you can see here, the fundamental, okay, quantitative, qualitative, empirical, descriptive, analytical, and applied. So there are various types of researches. Now let us see here the basic, that is the fundamental research. Okay. अब यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बहुत लोगों को पता है. Okay. The basic principle and the reasons for the occurrence of a particular event or the process or the phenomenon is called as a here the fundamental research. Okay. Now ये जो फंडामेंटल रिसर्च है इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में उसका थ्योरी क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका रीजन क्यों हो रहा है, किस लिए ये हो रहा है. इसलिए हमको इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल पता होना जरूरी है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, theoretical research कहते हैं. Okay. Now the study or the investigation of some natural phenomena or relating to pure science are termed as a basic research. तो जो भी नेचुरल फिनोमेना जो हो रहा है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते या फिर हम इसको आर्टिफिशियली डिस्कवर नहीं कर पाते, सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू द प्योर साइंस आर नोन एज अ बेसिक रिसर्च. ठीक है, ये प्योर रिसर्च होगा, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते. Now it is not concerned with the solving any practical problems of the immediate interest. Okay, तो ये practical problem से related नहीं हो सकता है. And it provides a systematic and deep insight into a problem and it facilitates the extraction of a scientific and the logical explanations and conclusion on it. तो यहाँ पर हम उनका एक systematic, एक डीप इनसाइड, हम जो भी कोई प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसका एक बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही डीप हम लोग उसमें थॉट लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड इट विल फैसिलिटेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द साइंटिफिक एंड द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. और इसी के थ्रू हम लोग इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे जिसको हम लोग, ये किसके अंडर आता है, दैट कम्स अंडर द फंडामेंटल रिसर्च. Now at the same time it will build a new frontiers of the knowledge. Okay, तो ये जो बेसिक नॉलेज हम उसका एक नया, इसका एक बेस फॉर्म कर सकते हैं जब हम इसका फंडामेंटल रिसर्च से रिलेटेड जो भी हम थॉट्स इसके लिए फाइंड आउट करते हैं, तो एक नया एक फ्रंटियर्स वी आर डेवलपिंग दिस एंड द आउटकम्स ऑफ दिस बेसिक रिसर्च फ्रॉम फॉर्म द बेसिक फॉर द मच अप्लाइड रिसर्च. यानी जब आपको ये पता होता है कि जब हमने कोई बेसिक उसका क्रिएट कर लिया तो जो भी उस बेसिक जो रिसर्च का जो भी आउटकम होगा दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर द अप्लाइड रिसर्च. ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द fundamental research, whereas fundamental research is independent of the applied research. Are you getting this? So researchers working on the applied research have to make use of the outcomes of this basic research and explore the utility of them. अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप सभी को ये पता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एलईडी आपको बल्ब बनाना है, राइट. तो एलईडी अगर आप मान लो आपको बल्ब बनाना है तो आपको उसके लिए सबसे पहले एलईडी क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. एलईडी यानी क्या होता है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, फिर आप उसकी थ्योरी क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, ये किस तरह से वर्क करता है. ठीक है, तो ये जब तक आपको पता नहीं होगा, ठीक है, तो इसके बाद आप ये अगर पता नहीं होगा तो आप उसकी यूटिलिटीज नहीं फाइंड आउट कर सकते. आप अभी भी आप देख सकते हो कि देयर आर सो मेनी रिसर्च इज गोइंग ऑन एलईडी, दो इट इज वी नो दैट कि एलईडी अभी भी बहुत ही चीपर है. एलईडी जो है वो काफी चीप है, अगर हम लोग बाकी दूसरे जो बल्ब्स वगैरह देखते थे तो उससे तो ये काफी चीप है और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है ये भी कम है. बट फिर भी उसके ऊपर काफी रिसर्च अभी भी शुरू है क्योंकि उनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे आपको ये पता होगा कि एलईडी का एप्लीकेशन सिर्फ हमारे घर के बल्ब या फिर इसके लिए ना होते हुए एलईडी का यूज हम काफी और जगह में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो
एलईडी है, लेजर्स है, ठीक है। तो मान लो अगर हमने एलईडी का अभी एक रिसेंट हमने एक जगह में पढ़ा था कि अगर कोई ऐसा कोई एक लाइट है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी, जिसकी जो वेवलेंथ है लाइट, अगर इफ इट इज इन बिटवीन लाइक 290 नैनोमीटर्स, हाँ, सो देन इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द मॉस्किटो। सो अब हमारे घर में आपको मॉस्किटो रिपेलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम अगर वो एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे जिसका वेवलेंथ ही 290 मीटर्स nanometers का रहेगा, so then definitely it will not of course it will be helpful for other things, यानी हम एक चीज को रिप्लेस कर सकते हैं by using only that one LED, ठीक है। so these LED is completely based on the means, अभी हम लोग ये क्या कह रहे हैं कि applied research is completely based on the fundamental research, right, या फिर basic research के ऊपर ही हमारा applied research डिपेंडेंट है। okay, now research on improving a theory or a method is also referred as a fundamental research, ठीक है। तो that means what, जब जैसे हमने अभी क्या कहा है कि एलईडी हमको पता है एलईडी क्या होता है, ठीक है, एलईडी का यूज क्या है ये भी हमको पता है कि that it always gives a light, it is what is LED, it is a light emitting diode, okay। अगर हमने ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया जो कि एक वेल नोन है, इसलिए मैं आपको एक ये एग्जांपल दे रही हूँ कि एलईडी इज व्हाट, इट इज अ लाइट एमिटिंग डायोड, बट फिर भी उसमें और उसकी थ्योरी को इम्प्रोवाइज किया जा रहा है। दैट मेथड is also used here to improvise its theory, and that theory is also known as a fundamental research, okay। For example, here suppose a theory applies to a system provided the system satisfies a certain specific condition, then it is also known as a fundamental research. Now let us consider here, now here I have given you some questions here to find out the some form the basic research. Why are materials like this? What are they? हाँ, बहुत ही कॉमन सी चीजें है, क्वेश्चन है। हाउ डज द क्रिस्टल मेल्ट, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये छोटे छोटे बच्चों के मन में आती है और ये आनी भी चाहिए, तभी आपके मन में जब तक ये क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा। वाई द साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द वाटर इज हीटेड, अब वाटर तो कभी हमने वाटर से कभी हमने आवाज नहीं सुनी, बट फिर भी जब वाटर हीट हो रहा है तो साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है ना। वाई डू वी फील डिफिकल्ट व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन अ सी शोर, ठीक है, जब हम अगर सिंपल से रोड से ऊपर जा रहे हैं तो हमको कोई डिफिकल्टी फील नहीं होती है, बट वही अगर हम लोग सी शोर से जा रहे हैं तो हमको थोड़ी डिफिकल्टी फील होती है, ठीक है। हाँ, सो दीज आर द क्वेश्चंस हियर, ओके। अब आपने ये बहुत बार देखा होगा कि बर्ड्स ऐसे ही क्यों जाते हैं, ये शेप में ही क्यों फ्लाई होते हैं, कभी आपने उनको तो किसी ने नहीं सिखाया है, बट ये शेप में ही क्यों उनका जो फ्लाई होते तो ये शेप में क्यों होते हैं। तो ये इन क्वेश्चन से जो व्हाई, हाउ, व्हाट, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अ रिसर्चर्स टू गेट द आंसर्स, ओके। तो मैं उसको बाद में भी आपको बताऊंगी कि जब आपको थीसिस राइटिंग करनी है या फिर जब आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है या फिर कुछ आपको बाद में उसका जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको लिखना है तो उस समय व्हाई, हाउ एंड व्हाई, ठीक है, ये क्यों वहां पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फंडामेंटल और द बेसिक रिसर्च। ऑल फेमस थ्योरम्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, these are the what, all famous theorems, all laws of maths and science we have studied from the childhood, these are what, ये बेसिक रिसर्च है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, we cannot change it, ठीक है। तो ये कौन है, ये बेसिक है, इसको हम ये ऑलरेडी स्टेटेड है, ठीक है, ये ऑलरेडी स्टेटेड है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ये ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो अब हम इनको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज द बेसिक और द फंडामेंटल रिसर्च। आर यू गेटिंग दिस? Now, let us hear about the applied research. Okay. Now, applied research means what? Here, in an applied research, one solves a certain problems by employing a well-known and accepted theories and principles. ठीक है? तो अब जैसे अभी हमने क्या बताया कि फर्स्ट कौन आएगा, बेसिक रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च जो ऑलरेडी स्टेटेड है, ठीक है। अब उसके बाद कौन आ रहा है यहाँ पर, अप्लाइड रिसर्च। नाउ अप्लाइड रिसर्च इज द आउटकम ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च, राइट। So here one solves the certain problems by employing well-known and accepted theorems and principles. तो जो भी well-known theorems है, जो भी accepted theories है, उनको हमको
को हमको आगे लेकर जाना है, दैट इज नोन एज अ अप्लाइड रिसर्च. So most of the experimental research, that is the case studies, interdisciplinary research, they are the examples of this applied research. Now, applied research is helpful for the basic research. Okay, so दोनों कैसे interrelated है? Research, the outcome of which has an immediate application is also known as a applied research. जिसका outcome immediate application में use किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं applied research. So such research is of practical use to current activity. Okay. For example, research on social problem has an immediate use. जैसे कुछ भी problem हो गया और हमने कुछ social problems है और उसके हमने solutions find out किए by using some fundamental theories. Okay. और वो जो social problems के ऊपर हमने जो solutions find out किए, that will be definitely of immediate use. Okay. So it is concerned with the actual life research. So research on increasing the efficiency of machine, increasing the gain factor and production of the material, pollution control, vaccination. तो इन सभी का जो भी आउटकम होगा वो इमीडिएट यूज के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है. तो फंडामेंटल रिसर्च में वो वैसा ही होता है. उसका जो आउटपुट है दैट वी हैव केप्ट इट, यानी हमने उसको सॉल्व करके निकाल के रख दिया है कि हाँ इट कैन बी यूज इन वेरियस एप्लीकेशंस. बट जब हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं by using the help, by taking the help of this fundamental research, then we can definitely use it on a at immediate use. तो हम उसको directly use में कर सकते हैं. जैसे अगर मान लो कोई मशीन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने 12th स्टैंडर्ड तक हीट इंजन पढ़ा है, राइट? ठीक है, हीट इंजन क्या होता है या फिर रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उनके थ्योरीज आपने पढ़ चुके हैं, राइट? बट अगर उसकी एफिशिएंसी, अब आपको ये भी फॉर्मूला भी उस समय आपको पता है कि एफिशिएंसी क्या होती है, हाउ टू डिटरमाइन द कैरनोट्स एफिशिएंसी, कैरनोट इंजन या फिर हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है. बट अगर अब हमको उसी मशीन का एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस थ्योरी को यूज करके उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे. एंड इफ इट इज डन for the first time by you, then it will be definitely is of the immediate use. तो अब यहाँ पर आप लोगों को इतना आपको पता है कि ये theoretically तो हमको यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स में दिखेगा, आपको कहीं और भी आप जहाँ कहीं पढ़ रहे कि अप्लाइड रिसर्च यानी क्या होता है कि सिंपल हम उसका अप्लाइड जो फंडामेंटल रिसर्च है उसको हमने डेवलप करके अप्लाइड रिसर्च में उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, यूज किया. बट आपको अब मैं थोड़ा सा और अलग उसका थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके मैं ये भी चीज बता सकती हूँ कि अगर मान लो व्हाइल ड्यूरिंग योर रिसर्च if you are getting any if you are getting any output which is not yet done by anyone, ठीक है, तो वो शायद आपको उसके लिए बहुत बड़ा लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है कि आप वो जो आपका आउटकम है वो किसी और ने नहीं किया है, अगर ये आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप उसमें उसका बिल्कुल आप पेटेंट बना सकते हैं और उसको पेटेंट फाइल करके ये आप अपने नाम से उसका पेटेंट करके आप उसको कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द रिसर्चर्स, सो वन कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दैट ऑल्सो. तो आपको ये धीरे धीरे समझेगा कि जब आप कोई रिसर्च करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल कैसे होगा, एट द सेम टाइम इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग. ओके, तो हम जितना हम लेते हैं उतना हम फाइनली सोसाइटी को रिटर्न बैक भी करते हैं. सो ऑफ कोर्स, सो हियर द रिसर्च इज ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, इंक्रीजिंग द गेन फैक्टर, ये जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, सो दीज आर फॉर द इमीडिएट यूज एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस अप्लाइड रिसर्च, राइट? Now here let us see here the difference between the fundamental and the applied research. Now let us see here the purpose of this fundamental research, to expand knowledge of the process, okay, not only for the business management or any rules, okay, so result in the universal principles relating to the process and relationship to the outcomes, okay, finding of the significance and the value of the society, value to society in general. तो अभी हमने ये बताया कि
कि एक तो that knowledge is already settled or established by someone, but we can expand that knowledge. That theory is also known as a fundamental research, whereas applied research is the outcome of this fundamental research. So one can improve the understanding of the particular business or management or any problem or results in the solution to the problem. Okay, so उस problem का solution find out करना ये किसका काम है? ये applied research का काम है. So new knowledge is limited to the problem. तो ये जो problem आपके पास है, suppose आपके पास जो machine दिया गया है उसकी efficiency कम है. अब हमको हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि उस मशीन का एफिशिएंसी कम है, जिसके कारण उसका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो भी कुछ करेंगे, so that will be a new knowledge, but it is restricted to that only problem, whereas this in fundamental it is in general. So the findings of having the certain significance and value to that society, right? So here the findings of the practical relevance and value to the managers and the organization. तो ये related to that particular topic से ही रहेगा, problem से ही रहेगा. Okay. Then the context here, the undertakings by the people based in universities, choices of topics and objective determined by the researchers. And here undertaken by the people based in variety of setting, including the organization, universities, objectives negotiated with the originator. तो ये originator है और ये हम researchers इनसे ले सकते हैं. यहाँ पर ओरिजिनेटर से जो भी इसका डिस्कवरी कर रहा है उसके साथ नेगोशिएट करके ये इसको सेटल डाउन कर सकते हैं. So here the flexible time scale and the tight time scale. So here one can, जैसे for example अगर मान लो during your research आपको लगता है कि ये हमने एक नया कुछ थ्योरी बनाया है, तो इसके लिए टाइम स्केल कोई बाउंडिंग नहीं रहता है. इट हैज अ फ्लेक्सिबल टाइम स्केल होता है, whereas यहाँ एक टाइम स्केल बहुत ही टाइट टाइम स्केल होता है, because here you have to give your outcome to that problem, right? Now let us hear about the descriptive versus the analytical. Now descriptive research consists of the surveys. तो जो भी हम लोग सर्वेज यहाँ पे जैसे अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं, आई थिंक वन ये थोड़ा स्लाइड आगे आता है. Yeah. So here you can see that there are some different types of approaches. Okay. So approaches for this, just a bit. I think I have missed one slide. No worries. ठीक है. So after fundamental and applied research, here we will see here about the descriptive and the analytical research. Okay, so descriptive versus the analytical research that we will see. Okay, now descriptive research consists of the surveys, fact finding inquiries of the different types. तो जहां पर भी हम लोग जैसे कोई सर्वे करते हैं या फिर जिसमें हम लोग इंक्वायरी बेस्ड कुछ हमारा जो सॉर्ट ऑफ रहेगा, दैट इज नोन एज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है इज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट प्रिवेल्स द टाइम एट द टाइम ऑफ द स्टडी. तो यहाँ पर हम लोग इसके जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ
वहाँ हमको फील्ड वर्क करके उनके जो भी पॉइंट्स है उनके इंक्वायरीज करके हम उनके जो वहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं. Okay, so that ex post facto research, it is quite often used for the descriptive research in a studies in social science and the business research. तो ये जनरली ex post facto research जो है ये हमारा descriptive से related है और इसमें immediate actions वाला आपको इसमें नहीं मिलेगा. The most distinguishing features of this method is that the researcher has no control over the variable here. तो जैसे ये आपका वेरिएबल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा. जैसे हम मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था x + 2 = y. ठीक है, तो ये x एंड y ये क्या है, ये वेरिएबल्स है. ठीक है, और x ये कौन सा वेरिएबल है, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर एज y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इन दोनों का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं आता है. यहाँ पर दिस इज व्हाट इट इज कंप्लीटली मीन्स जो भी आपका सर्वे करने के बाद जो भी पॉइंट्स आते हैं या फिर इंक्वायरी करने के बाद जो भी पॉइंट्स आते हैं उन्हीं डेटाबेस उन्हीं सैंपल्स के ऊपर ही आपका आंसर रिलेटेड रहेगा. ठीक है, he or she has to only report what is happening and what has happened. ओके, तो उसी से ही उनको कंक्लूजन फाइंड आउट करना है. वो अपने जो उनको सॉल्यूशन फाइंड चाहिए उस हिसाब से उसको आप सैंपल्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ठीक है, तो सैंपल मीन्स व्हाट, इट इज अ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल. Okay, now the majority of these ex post facto research projects are used for the descriptive subject studies in which the researchers attempt to examine the phenomena such as consumers, performance, the frequency of the purchases, shoppings, etc. These are all related with the post facto research projects. Okay, तो ये पूरा descriptive studies से related है जहाँ पे ये रिसर्चर्स क्या करते हैं, ये पूरा दे फाइंड आउट द आंसर्स बाय गेटिंग दिस टाइप ऑफ डेटा. द मेथड्स ऑफ रिसर्च एडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर द सर्वे मेथड्स. जैसे हम लोग मैंने आपको वही बताया कि सर्वे मेथड यानी आप इसमें डायरेक्टली फील्ड वर्क में भी जा सकते हैं या तो फिर आप कोई इंक्वायरी मेथड कर सकते हैं. ठीक है, इंक्वायरी मेथड में आपका अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. या तो आप गूगल फॉर्म से इनके लिए इंक्वायरी फॉर्म बना सकते हैं या तो फिर आप उनको पर्सनली जाके उनके इंक्वायरी करके आप उनसे डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं. So these are all what the survey method, including the correlation and the comparative method that we see. Whereas in analytical research, the researcher has to use the already available fact or the information and analyze them to make the critical evaluation of the subject. ठीक है, जैसे आप इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मुझे अगर आपको बताना है. ठीक है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल यानी लेट अस कंसीडर द सेंसस. ओके, तो सेंसस अगर हमको फाइंड आउट करना है सेंसस के लिए तो हमको क्या करना पड़ता है, जो जितने बूथ लेवल ऑफिसर्स है हमारे पूरे इंडिया में जितने, तो वो घर घर में जाके हर घर में कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, उसमें अबाउट 18 कितने हैं. ठीक है, बिलो 80 कितने हैं, अबाव 80 एंड अबाव 100 कितने नंबर ऑफ पीपल है, वो फाइंड आउट करेंगे. राइट, तो ये सेंसस में उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया है, सर्वे से उनको एक प्रॉपर डेटा मिल गया. अब इसमें एक जैसे एनालिटिकल रिसर्च में क्या हो रहा है, that researcher has to use the available facts or the information. अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल गया है कि जितने लेट अस कंसीडर कि कुछ नंबर ऑफ पीपल हैं जो अबाव 80 है. ठीक है, तो अबाव 80 के लिए हम लोग कुछ और फैसिलिटीज डेवलप कर सकते हैं या तो फिर उनके लिए लेट अस कंसीडर अबाउट द वैक्सीनेशन. ठीक है, तो हमने इन 80 अबाव लोगों के लिए वैक्सीनेशन का एक यूज उनके लिए दिया है. ठीक है, तो हमको ये पता है कि इतने नंबर ऑफ सपोज सर्टन एक एरिया ऑफ पॉपुलेशन में, ठीक है, इतने नंबर ऑफ पीपल है जो अबाव 80 है, उनको हम इतना इतना वैक्सीनेशन दे सकते हैं. तो फिर गवर्नमेंट उसके लिए उतने लोग उतने पीपल वो एरिया के लिए एरिया ऑफ पॉपुलेशन जो है वहाँ उतने लोगों के लिए उतना वैक्सीनेशन वो प्रोवाइड करता है. तो ये क्या हुआ, ये एनालिटिकल रिसर्च which is completely based on this descriptive research. That means अब ये descriptive या फिर ये जो सर्वे हुआ उसका जो आउटकम हुआ उसी के ऊपर ये एनालिटिकल रिसर्च डिपेंडेंट है. समझ में आया आप सभी को?
So it has to use the already available facts or the information and analyze them to make a critical evaluation of the subject. तो जो भी इसमें हमने क्या किया, इस गैप को फाइंड आउट करके उसका जो भी आंसर आया हमारा डिस्क्रिप्टिव, जो भी उसका सॉल्यूशन आया है, उस डाटा और इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने आगे में और दूसरे पर्पस के लिए उस डेटा का यूज करके उनका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके उनको सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को. ठीक है, दैट इज नोन एज एनालिटिकल रिसर्च. Now next comes is a exploratory research. Okay, so exploratory research is a research conducted for a problem and that has not been clearly defined. तो जैसे let us consider कि आपको एक प्रॉब्लम आपके पास दिया है, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी को नहीं पता है, ठीक है, बट वन हैज टू डू इट, राइट. ठीक है, तो हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी को क्लियरली पता नहीं है, बट वी आर डूइंग दिस. जैसे हमने ये अभी देखा था कि जो रेडियो एक्टिविटी थी, आप लोगों को सभी को पता होगा कि रेडियो एक्टिविटी एक सडन एक्सीडेंटली हमको ये फाइंड आउट हुआ, यानी हमको यानी जो प्रोफेसर थॉमसन है उनको एक्सीडेंटली उनको फाइंड आउट हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होता है, दैट इज नॉट, द आंसर इज नॉट क्लियरली डिफाइंड. It often occurs before we know enough to make the conceptual distinction or posit a explanatory relationship. The exploratory research helps in determining the best research design, data collection method, and selection of a method. Okay, so here we are finding out the problems which is not, we don't know about the clear solution, बट उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग डेटा कलेक्शन मेथड यूज करेंगे. ठीक है, उसका एक डिजाइन फाइंड आउट करेंगे कि इसको किस वे से फाइंड आउट करना है. उसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्ट जो है, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट यूज करेंगे कि ये आंसर इसको फाइंड आउट करने के लिए दिस इज अ करेक्ट वे. ओके, नाउ let us see the exploratory versus the descriptive research. Okay, now exploratory research क्या है और descriptive research हमने overall देख लिया है. Now let us hear the meaning of this exploratory research. Now exploratory research means a research conducted for formulating a problem for more clear investigation, and it is generally conducted when a little is known about the topic of interest. Okay, तो यहाँ आपको बस इतना पता है कि हमको उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही थोड़ा पता है, बट उसका आंसर हमको फाइंड आउट करना है, उसके प्रॉब्लम को हमको फाइंड आउट करना है. सो रिसर्च इज कंडक्टेड टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम फॉर मोर क्लियर इन्वेस्टिगेशन, and it is conducted when it is a very small portion is known about that topic of interest. Okay, whereas the descriptive research is a research that explore and explain an individual or a group or a situation. तो जैसे हमने यहाँ पर वही बताया है कि एक पर्टिकुलर फैमिली, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया था सेंसस का, तो सेंसस में हमने क्या किया, हम हर घर में जाके उनका एक इंफॉर्मेशन निकाला. सो वी हैव एक्सप्लोर्ड एंड वी हैव एक्सप्लेन दैट ये फैमिली में इतने मेंबर्स है, इतने मेंबर्स 18 अबव है, इतने मेंबर्स 80 के बिलो है. ठीक है, हमने एक ग्रुप का सर्वे किया, ठीक है, जैसे फॉर एक पर्टिकुलर एरिया का किया. ठीक है, और उसमें क्या सिचुएशन हो सकती है वो भी डेवलप कर लिया. ठीक है, then here what is the objective? To provide the insight and the understanding and develop hypothesis. Okay, so अब जैसे hypothesis means what? It is like a imaginary thinking for that particular topic. Okay, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं कि इमेजिन करके एक प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट उसको बना रहे हैं. तो जनरली ये हाइपोथेसिस जो है ये साइंस में हम बहुत बार यूज करते हैं. सो वी आर प्रोवाइडिंग इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप अ हाइपोथेसिस, एक प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट को एक प्रॉपर स्टेटमेंट हमने उसको एक इमेजिनरी स्टेटमेंट उसको दिया है. टू टेस्ट द स्पेसिफिक, एंड हियर इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, टू टेस्ट द स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, एग्जामिन द रिलेशनशिप and describe the characteristics and functions. Okay, this can be done in the descriptive research.
Now, as we had said that the descriptive research is a rigid यानी हम इसमें इसके डाटा को कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. जो हमको मिला है, what does we have get it, we will find out the outcome or the solution from the getted that we whichever the data we have already got, उसी में से हम एक आउटकम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही रिजिड, इसका जो डिजाइन होगा वो काफी रिजिड होगा, इसमें कोई फ्लक्चुएशंस, कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते. whereas एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये फ्लेक्सिबल है. जैसे हमने क्या कहा कि x + 2 = y, तो हम x की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, y की वैल्यू अल्टीमेटली उसके ऊपर से चेंज होगी. यानी x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू अल्टीमेटली चेंज होनी ही होनी. तो वन कैन चेंज हियर. तो द वेरिएबल्स, अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, राइट, तो यहाँ अगर हमने इस वे से, हम पहले मेथड 1 से उसको परफॉर्म करके देखेंगे. इफ इट इज सक्सेसफुल देन इट्स वेल एंड गुड. इफ इट इज नॉट सक्सेसफुल देन विल ट्राई द सेकंड वन. ओके, तो हम सेकंड जो रहेगा उसको ट्राई करके देखेंगे, थर्ड ट्राई करके देखेंगे, फोर्थ ट्राई करके. so it is what trial and error method, right? so one can make it flexible. whereas descriptive research में वैसा कुछ भी उसको trial and error नहीं कर सकते. you have to collect the data and from this data you have to find out the solution. Okay, now the research process is a unstructured and here the descriptive. ये तो अभी हमने देख लिया कि यहाँ we are doing in exploratory research, we are doing a trial and error method, whereas in descriptive research we are doing a structured one. यानी हमको पता है कि हमको यही वे से ही इनका डेटा कलेक्ट करके उनका आउटपुट हमको लेना है. ओके, नाउ सैम्पलिंग मीन्स, मैंने आपको अभी सैम्पलिंग बताया, तो सैम्पलिंग का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम बाद में ले सकते हैं. ठीक है, तो सैम्पलिंग मीन्स व्हाट, कि जैसे जो भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ पीपल है या फिर कोई उनके ऊपर हम हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर लेट अस कंसीडर कि हम उनसे डेटा ले रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी आपका एक एरिया है, लेट अस, अब हमने सेंसस का एग्जांपल लिया, इसीलिए इंडिया में सेंसस हो रहा है. ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हर स्टेट का सेंसस लेते हैं. हर स्टेट के बाद हर डिस्ट्रिक्ट का, हर तालुका का, हर एक गांव का एक ऐसे सेंसस होता है, राइट. इसका मतलब क्या है, हमारा सैंपल पहले छोटा था, फिर हमने उस छोटे छोटे सैंपल्स को कलेक्ट करके एक बहुत बड़ा सैंपल का हमने क्या किया है, एक आउटकम निकाल दिया, राइट. so this is what the probability, this is the probability sampling. whereas in exploratory there is no as such probability of this sampling. ठीक है, तो यहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग हो सकता है, अलग अलग टाइप के सैम्पलिंग्स है, तो हम वो बाद में देखते हैं. लेकिन एक सैम्पलिंग यानी ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप वेयर वी आर स्टडीइंग द रिसर्च. ओके, then structural design. so no pre-planned design for analysis, as we have already said that it is what trial and error method. ठीक है, so there is no as such pre-planned design for analysis, whereas in descriptive research there is a pre-planned design for the analysis. हमको इसी वे से ही जाना है, हम कोई भी स्टेप को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं. अगर हम कोई स्टेप को स्किप करके आगे बढ़ते हैं तो हमको हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली नहीं मिलेगा और हम प्रॉपरली आउटकम नहीं फाइंड आउट कर सकते. नाउ द फाइंडिंग्स और द रिजल्ट्स फॉर दिस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज वेरी कंक्लूसिव, क्योंकि हमको पता है कि हम बराबर प्रॉपर स्टेप से ही गए हैं, तो हमारा जो भी आंसर रहेगा ये बहुत ही स्पेसिफिक और कंक्लूसिव रहेगा, जिसमें हमारा जो फाइंडिंग्स है इट कैन बी यूज्ड एज ए इनपुट फॉर अदर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, जैसे हमने अभी क्या बताया कि डिस्क्रिप्टिव का जो भी आउटकम रहेगा वो किस में यूज हो रहा है, वो एनालिटिकल में यूज हो रहा है, राइट. सो फाइंडिंग्स कैन बी यूज्ड एज अ इनपुट फॉर द डिसीजन मेकिंग. तो ये कहीं पर भी ये आप इसका जो आउटकम है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जा सकता है. whereas in exploratory the generally followed by further exploratory और the conclusive research. तो हमने इसका जो आउटकम है वो किसी और कंक्लूसिव या फिर और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए छोड़ दिया है, जैसे हम अभी कर रहे हैं. जैसे हम रिसर्च का नाम क्या बोला जाता है, रिसर्च यानी वी आर नॉट डूइंग एनी सर्टेन डिस्कवरी. हम कोई बहुत बड़ा डिस्कवरी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी का
आउटपुट जो है, ठीक है, हम किसी का आउटपुट लेके हम उसी को कंटिन्यू और उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें और कुछ कुछ फाइंडिंग्स कर रहे हैं, ठीक है. सो हेंस इट कैन बी फॉलोड बाय फर्दर एक्सप्लोरेटरी और द कंक्लूसिव research, right? Is that clear to everyone? Now let us see here the applied versus the fundamental. ठीक है, अब अलग अलग वे से हम देखते हैं. So an attempt to find a solution to an immediate problem encountered by the firm, an industry, any organization or the society is known as applied research. हमने अभी क्या बताया था कि जब हम किसी का आउटकम यूज करके उसको इमीडिएट यूज में दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अप्लाइड वन. ओके, and the researchers engaged in such researches aim at drawing certain conclusion confronting a concept, concrete social or the business problem. ठीक है, तो ये हम इसमें जितने भी रिसर्चर्स है ये बहुत ही कन्फाइंड होते हैं. उनका एक एम रहता है कि हमको इसका सिर्फ इस प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. वो इन जनरल नहीं हो सकता है, वो कन्फाइंड टू वन टॉपिक ही होगा. whereas this fundamental research mainly concerns the generalization and the formulation of a theory. ठीक है, तो फंडामेंटल में हमने अभी देखा है कि वो जनरलाइज्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जिसका यूज हम अप्लाइड में भी कर सकते हैं, कोई थ्योरी को फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं. So that means we can say here that is done it is said by Young in Kothari. ठीक है, so in 1980 gathering knowledge for the knowledge sake is termed as a pure or the basic research, and the researchers relating to pursue mathematics or concerning some natural phenomena are instances of the fundamental research. Okay, so pure mathematics है या फिर कुछ certain phenomena को हम लोग, so these are the examples of the fundamental research. So studies focusing on the human behavior also fall under the category of this fundamental research, जो हम change नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो वो क्या है, ये हमारा fundamental research में आ जाता है. right? Clear? Now next comes the historical research. अब historical research भी सेम पार्ट है जिसमें हम इसका जो भी आउटपुट होगा या फिर हम जो भी सर्वे करके आते हैं तो इसके कुछ भी फैक्ट्स को हम चेंज नहीं कर सकते. वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज. हमने जो देखा है, हमने जो कलेक्ट किया है, वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज. ओके, the systematic collection and the evaluation of a data to describe, explain and understand the actions or the event that occurred sometimes in the past, that is known as a historical research. Okay, so there is no as such manipulation, no control of the variable as in experimental research. तो जैसे हमने अभी experimental research में बताया था x plus 2 is equals to y. So if we will vary x, then ultimately y will vary. So we are having the control on the variable. Whereas in historical research, there is no manipulation or the no control of variables. ठीक है, तो ये हम इसमें कुछ भी changes नहीं कर सकते हैं. Right? Now, an attempt is made to reconstruct what happened during a certain period of time is completely and accurately as possible. लेकिन हम यहाँ पे इसके वेरिएबल्स को तो चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट वी कैन मेक एन अटेम्प्ट दैट विल रिकंस्ट्रक्ट, जिसमें हम ये कुछ यूज करके हम बता सकते कि उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में एग्जैक्टली क्या हुआ था, किस तरह से हुआ होगा, ये अटेम्प्ट हम कर सकते हैं. सो दिस कम्स अंडर द हिस्टोरिकल रिसर्च. So what is the purpose of historical research then? So we can make the people aware of what has happened in the past in order to, अब ये तो हमको बहुत ही important है क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत बार आप लोगों को यही लगता है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं. Each and every topic has a history. It is not only the history of Shivaji Maharaj and our India or the world. ठीक है,
तो ये सिर्फ वो हिस्ट्री नहीं है, अगर हम हमारे सब्जेक्ट का भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक लेते हैं, या फिर कोई आप केमिस्ट्री से रिलेटेड आप कोई टॉपिक लेते हैं, या बायोलॉजी से लेते हैं, ठीक है, तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन हिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे हम लोग मान लो रेडियो एक्टिविटी से कंसीडर करते हैं, तो हम रेडियो एक्टिव के लिए हमने क्या कहा कि पहले एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे थे, ये उन्होंने पहले कैसे किसी ने एक्सप्लेन किया था कि इट इज लाइक अ वाटरमेलन एंड इट इज ऑल द ब्लैक सीड्स जैसे वो दिखते हैं। फिर उसके बाद थॉमसन ने कहा कि नहीं, देयर इज अ एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट एटम। फिर उसके बाद बोहर मॉडल आया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, देयर इज अ एटम एंड उसके अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में रोटेट हो रहे हैं जिसमें एक शेल्स है KLMN, राइट। तो ये एक हिस्ट्री है रिलेटेड टू द रेडियो एक्टिव, राइट। फिर उसको एनहांस किया गया, बहुत सारे उसमें लॉज बनाए गए, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फिर उसमें और और दूसरा एक लॉ है कि लॉ ऑफ हाफ लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम, ये क्या है, तो दीज आर द हिस्ट्री। फिर हमने उससे रिलेटेड न्यूक्लियर फ्यूजन कंसिडर किया कि पहले कैसे हुआ होगा। फिर उसके बाद फिशन कंसिडर किया कि बाद में क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे रिएक्टर्स पर हमने उससे फाइंड आउट किए, रिएक्टर्स क्या होते हैं, राइट। फिर उसके बाद सिंक्रोट्रॉन क्या होता है वो हमने फाइंड आउट किया, हाई एनर्जी बीम हमको अगर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे बना सकते। तो वी आर यूजिंग दिस हिस्ट्री फॉर लर्निंग सम failures and to get the success, okay। So what is the purpose of this historical research? To make the people aware of what has happened in the past in order to learn from the past failures and their successes also, okay। So apply them in a present day problems। जैसे अभी हमने कहा कि इसका यूज कहाँ हो सकता है ना। तो इसका यूज कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को डेवलप करने में, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करने में हम इसका यूज कर सकते हैं जो सक्सेसफुल हुआ है। और कभी कभी हम जो फेल्यूर्स है उनका फेल्यूर्स फाइंड आउट करके उसमें और सक्सेस भी डेवलप कर सकते हैं, ओके। वी कैन मेक प्रेडिक्शंस आल्सो इन, जैसे हमने हिस्ट्री में कहा आपको कि हिस्ट्री में हम कुछ प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं कि किस तरह से ये हुआ होगा, किस तरह से इसको कर सकते हैं। We can test this hypothesis concerning the relationships or the trends and understand the present educational practices, policies more fully, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें आप जैसे अभी आपको ये दिखता होगा कि जितने भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है, हर बार NEP क्या करता है, NEP इज व्हाट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आफ्टर एवरी अभी तो ये बहुत सालों के बाद हुआ है, लेकिन NEP जो चेंजेस करते हैं, राइट, और या फिर कुछ पॉलिसीज चेंजेस होते हैं, तो ये फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स होता है, जिसमें हिस्टोरिकल रिसर्च का भी एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? So let us hear about the qualitative versus the quantitative. Okay. So the quantitative research relates to the aspect that can be quantified and that can be expressed in terms of the quantity. Okay. तो जिसमें हम एक अमाउंट या फिर एक क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फॉर गेटिंग सच क्वांटिटी, ठीक है, ये जो क्वांटिटी हमको अगर चाहिए है तो उसके लिए हमको कुछ स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है, कुछ अलग इकोनोमेट्रिक जो यूज मेथड्स है उनको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय आपको बहुत सारी चीजों को कोरिलेट करना है, time series analysis, regression. These are the examples of this quantitative research. Okay, so here it involves the measurement of the quantity or the amount. Okay, and various available statistical or the econometric methods are adopted for the analysis in such research, which includes here the correlation, regression, and time series analysis. Now, the qualitative research is concerned with the qualitative phenomenon and more specifically the aspects related to or involving the quality or the kind. Okay, तो यहाँ पे आपको quality बहुत ही specifically आपको इसका आंसर मिल सकता है, right? Now the next one, the qualitative versus the qualitative में, it is an important type of the qualitative research is a motivational research which investigate into the research for certain human behavior.
The main aim of this type of research is discovering the underlying motives and desires of the human being by using the in-depth interviews. तो आप उसमें in-depth interviews लेके उनका जो भी quality है, that we can get it. Okay. And the other techniques employed in such researches are the story compilation test, sentence compilation test, okay, and association test, and other similar projective tests. Okay. So these are the techniques to get the information. So it is particularly insignificant in the it is particularly significant in the context of the behavioral science. ठीक है, तो जहाँ पे हमको क्वालिटी आपको जब फाइंड आउट करनी है, किसी के ह्यूमन बिहेवियर को आपको फाइंड आउट करना है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाता है, which aims at discovering the underlying motives of the human behavior. It analyzes the various factors that how to motivate the human beings to motivate a certain manners, beside contributing to the understanding what makes the individual likes or dislike a particular thing. However, it is worth noting that the conducting qualitative research is a practice and it is, of course, a difficult task. ठीक है, so generally जब हम लोग ये इस टाइप के रिसर्च जब करते हैं, तो we have to seek a very good guidance from the expert researcher. ठीक है, जो एक्सपीरियंस हो, जो एक्सपर्ट हो, ऐसे रिसर्चर्स का एक गाइडेंस लेके ही हमको ये क्वालिटेटिव रिसर्च हमको ये करना चाहिए. तो जबकि आपको क्वालिटेटिव में पता चल गया है कि हम किसी स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल मेथड से उसकी क्वांटिटी को दे सकते हैं, बट क्वालिटेटिव इज लाइक वी हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ दिस एक्सपर्ट एंड experienced researchers. Now let us look at the conceptual and the empirical. Okay, the research related to some abstract idea or the theory is known as a conceptual research, right? जहां पर भी concept related भी topic आ जाता है, तो हम उसको एक conceptual research कहते हैं. The research related to certain abstract idea that is not accepted by everyone, but we can say that it will be a revolutionary idea. ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया हो सकता है जो सब लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो थ्योरी एक्सेप्ट, दैट इज नोन एज अ कंसेप्चुअल रिसर्च. So generally the philosophers, thinkers use it for developing the new concept or reinterpreting the existing one. तो जो नया कोई कॉन्सेप्ट उनको बनाना है, जो थिंक करके उन्होंने एक नया कुछ बनाया है, तो उसको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसको रीइंटरप्रेट कर सकते हैं. उसको फिर से वो क्या कर सकते हैं कि उसको एक नया एक फॉर्म, अलग फॉर्म हम दे सकते हैं. Whereas in empirical research, it exclusively lies on the observations or the experience with hardly any regard of the theory and system, जिसको system और theory के ऊपर कोई dependency नहीं है, right? So it is on the completely relying on the observation, what experience it is getting, that is known as a empirical research. Are you getting this? तो empirical research ये completely observation और experience के ऊपर dependent है, whereas the conceptual research जो है ये completely ideas, theories इनके ऊपर dependent. Okay, so one can say that the empirical research is a database. Okay, so it can often comes up with the conclusion, जिसका एक conclusion हम तुरंत बना सकते हैं, that can be verified through the various experiments, various observations, जिसको हम लोग ये database research कह सकते हैं, and it come up with the conclusion, जिसको हम vary कर सकते हैं by using experiments and all. So empirical research is also known as the experimental type research. So are you getting this ना concept? अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाया है कि ये किससे related है, right? So empirical research is experimental research, in which it is important to first collect the important facts, their sources, and actively take steps to simulate the प्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. तो जैसे हम लोग यहाँ वेरिएबल का यूज है, जहाँ हमारा पूरा कंट्रोल हमारे वेरिएबल्स के ऊपर है, ऐसा ये एम्पिरिकल रिसर्च है, ऐसा ही हमारा एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च है. तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. नाउ इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्च फर्स्ट फॉर्मुलेट द वर्किंग हाइपोथेसिस. हमको करना क्या है, उसका एक स्टेटमेंट वो फाइंड आउट करेंगे, एंड आफ्टर स्टेटिंग द प्रॉब्लम दे विल गैदर द सफिशिएंट topics or the facts to prove and disapprove the stated hypothesis. ये correct है या फिर नहीं है, पहले statement बना लेंगे, एक imaginary statement बना लेंगे, फिर information gather करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये
ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है, इसको इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च, सो the longitudinal time series research, okay, that means what research may be like one time or the longitudinal, ठीक है, ये दोनों यानी हम एक समय में एक कर सकते हैं या तो फिर एक समय में दो पैरेलली भी कर सकते हैं, राइट। so that is known as a longitudinal time series research. While the research is restricted to a single period in a former case, it is conducted over the several time periods in the later case, okay. So depending on the environment in which the research is to be conducted, it can also be the laboratory research or the field setting research or the stimulation research, and beside the diagnosis or the clinical. तो ये अलग अलग types of research हम लोग कह सकते हैं. Now, in such research, the in-depth approaches or the case study methods may be employed to analyze the basic causal relationship. Okay. तो ये जो है, ये जो स्टडीज है, दैट इज अंडरटेकन अ डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है, तो जिसमें उसका कॉज, इफेक्ट और सभी को कंसिडर किया जाएगा और इनके स्मॉल सैंपल्स को लेके हम लोग जनरली उसका डेटा, शार्प डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. तो आपने देखा होगा कि जब हमारा सैंपल बहुत बड़ा है, सैंपल यानी द नंबर ऑफ पीपल वी आर ऑब्जर्विंग, पीपल है या फिर जो भी टॉपिक, तो जब सैंपल बहुत बड़ा है तो हमारा जो आंसर रहेगा वो शार्प नहीं हो सकता, बहुत ही कंसाइज हमारा आंसर नहीं हो सकता. वेरएज अगर हमारा डेटा सैंपल जो बहुत ही स्मॉल है तो बहुत ही शार्प हमारा डेटा कलेक्शन मेथड्स के कारण उनका जो आंसर रहेगा वो बहुत ही शार्प रहेगा. सो द रिसर्च में ऑल्सो बी एक्सप्लेनेटरी. The formalized research study must consist of the substantial structure and the specific hypothesis to be verified. And as a regard, the historical research sources like historical documents, remains, etc. are also considered. And it is utilized to past event or idea, and it also includes the philosophy of the people or the groups of the people. Now let us consider about the correlational research. Now, अब जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे टू और मोर वेरिएबल्स भी रह सकते हैं, राइट. So the relationship among the two or more variables are studied without any attempt to influence them. ठीक है, दो और मोर, अगर हम दो और उससे ज्यादा वेरिएबल्स का हमने स्टडी किया है तो जिसमें हम उसके दे आर स्टडीड विदाउट एनी अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस देम, तो इसमें एक भी अटेम्प्ट यूज ना करके हम लोग इसका इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि कोरिलेशनल, यानी x इज sorry, y is dependent upon the x, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोरिलेशन. So investigate the possibility of relationship between the two variables, although the investigation of more than two variables are common. Okay, so a form of a descriptive research because it describes an existing research between the variables. So ये descriptive research से ही related है. So here let us see about the correlational research. So it assesses the relationship among the naturally occurring variable, that is altitudes, preferences, intelligence, personality traits, feelings, age, sex. So these are what the conception is, comes under the correlational research. So that means what, this number of people group, this number of people group are very intelligent, this number of people having the personality good, having good personality. Okay, they're altitude. So we can relate this. Okay. So use correlational coefficient to describe the relationship between the two variables. जैसे हमने यहाँ पे बताया कि that means we can let us consider कि the age group of up to 30 years, they are very active. So that means what, the 30 years people are they are related with the activeness or the physically active people. We can relate it. Okay. So below that we can say that above that they are becoming lesser and lesser active, right? So this is what the correlational coefficient. So it depends upon the variable and determine the predictive relationship between the two variables. तो हम ये predict भी कर सकते हैं, एक तो हम state भी कर सकते हैं, predict भी कर सकते हैं. So researchers are not interested in simply the responses of those surveyed. So it inference means what is use a sample to describe the larger population. Careful selection of a survey sample generalize the finding from the sample to the population. Okay.
Now examples are here given. The certain, let us see. Now here some MCQs are given. Let us see. Action research means. Can anyone tell me? Action research means. A longitudinal research, ये पैरेलली हो रहा है? No. Applied research हो सकता है? नहीं हो सकता है. A research initiated to solve a immediate problem. क्या ये हो सकता है? Or a research with a socio-economic object. So action related means what? It is related with the problem solving. So research initiated to solve an immediate problem is related known as a action research. Okay. Now the next one. Newton gave 3 basic laws of motion. So this research is categorized as. अब न्यूटन ने लॉ दिए हैं तो इसमें से कौन सा हो सकता है बताइए आप. Can anyone tell this? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. So which will be the answer? Option Option C. C. Very good, very good. क्योंकि ये बेसिक लॉज हैं जो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये फंडामेंटल रिसर्च के अंडर आएगा. वेरी गुड. अ कंट्रोल ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन. तो जहां पर हमने कंट्रोल ग्रुप कंडीशंस लिखे हैं तो ये हिस्टोरिकल नहीं हो सकता है. ठीक है. अब हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है x+2 = y, राइट. So we can say here the experimental research is a control group condition. Okay. तो ये डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता है, ये सर्वे नहीं हो सकता है, बिकॉज सर्वे रिसर्च इज नॉट डिपेंडेंट. ओके. सो वट एवर द डेटा वी आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल, दैट इज it is not controlled. We do not have to manipulate it. We do not have to find out our own outcomes. We have to give them we have to find out the conclusion as it is from the data. Okay. So this is not comes under the control group. The survey research will not come under the control group. It will come. What is the answer then? Which one is the answer? Experimental research. Very good, very good. Okay. Ex post facto research means the research is carried out after the incidents. It is carried out prior to the incidents. It is carried out along with the happening of the incident, or the research is carried out keeping in mind the possibilities of accident. तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, उसका नाम ही बताया गया है एक्स पोस्ट फैक्टो. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. यानी जो इंसिडेंट है वो होने के बाद जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे इसका एग्जांपल आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल बता देती हूँ. तो जो भोपाल ट्रेजेडी हुआ है, राइट. तो भोपाल ट्रेजेडी ये होने के बाद लोगों ने वहां पे रिसर्च किए हैं कि अब यहाँ पर जो जितने जनरेशन है उनको क्या क्या डिसीजेस हुए हैं. ठीक है. उस समय की जिस समय वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ उस समय उन पीपल वहां के लोगों को कौन से डिसीजेस हुए वो फाइंड आउट किया. ठीक है. अब उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्या उनके नेक्स्ट जनरेशन को कोई प्रॉब्लम होने वाला है. हाँ, तो वो फाइंड आउट किया ऐसे कितने जनरेशन है उनको वो डिसीजेस होने वाले हैं या फिर हो सकते हैं, और ये कब क्लियर होगा वो भी उन्होंने फाइंड आउट किया. तो दैट इज व्हाट एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने उसको ये रिसर्च किया. दैट इज इट इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट इज टेकिंग प्लेस. ओके. The research stream of an immediate application. अब इसी का हमने अभी देखा था आंसर. आप बताइए अभी कौन सा आंसर करेक्ट होगा. Immediate application. Option B. Option B, that is a action research. यानी जहां हमारे पास प्रॉब्लम है जिसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, दैट इज नोन एज अ एक्शन रिसर्च.
Now let us see here the approaches to the research. Okay, so research approaches are the plans and the procedure for the research that span the steps from the broad assumption to the detailed methods of a data collection, analysis and interpretation. तो अब आपको पता है कि जब हमको रिसर्च करना है तो वी हैव अ ह्यूज डेटा, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है जिसको हमको कंसाइज करके एक छोटे से पॉइंट में लेकर आना है, राइट? So we are doing it from the generalized to the confined point. Okay. So that span the steps from the broad assumption to the detailed methods of a data collection, analysis, and interpretation. So this is the approach. So there are the three common approaches to conduct the research: are the quantitative, qualitative, and the mixed approach. Okay. Now the approaches to the researchers. So qualitative approach is the focus. Now here there are comes 3 points. That is the focus group interview, in-depth interview, and the projective interview. Whereas in quantitative, now see, as we have already said about the qualitative means here the not only related with the behavior, but we can say here why it is the word said interview, the focus group interview. When let us consider हम लोग जब स्कूल में जब हम कोई एक टास्क हम बच्चों को देते हैं, राइट, कॉलेजेस में जब हम बच्चों को एक टास्क देते हैं तो वी मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो ग्रुप ऑफ पीपल में उनका जो फोकस है हम एक ग्रुप के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, या तो फिर एक इन डेप्थ यानी 1-to-1, या तो फिर प्रोजेक्टिव इंटरव्यू. ऐसे अलग अलग टाइप्स के जिसमें उनकी क्वालिटी हमको मिलती है, राइट? Quantitative approach में क्या, it is a inferential approach, experimental approach, and the simulation approach that comes under the quantitative approach, and the mixed one comes between these two. Now the methods of the research, they are defined as a specific techniques or the methods, okay, or the researcher uses in a performing a research operation. So these are used to determine the instrument or the behavior or used in constructing the research techniques. Okay. Now it is also referred to the instrument or the behavior used in performing the research progress, such as making the observation and data recording, data processing, and data representation. Now let us see here the some tools. Okay. Now the tools are that is, these are the research method can be grouped into these two methods, or we can say tools. So data collection methods and or tools. That methods involves here the data collection. Usually when this available data cannot or is insufficient to solve the research problem. तो जब हमारे पास जो कोई proper data नहीं है या फिर insufficient है, तब हम लोग ये data collection method या फिर इस tools को use करते हैं, ठीक है? Now as I have already explained you, there are various ways to collect this data. Okay, either you can do a survey or you can go for this Google forms or interviews. Okay, there are various techniques. Analytical research methods are the tools that involves the technique for data analysis, interpretation, or to establish a relationship between the data available or and the unknown technique for evaluating the result and the reporting. Now let us hear the types of research and the research method and research technique. So let us consider here the different types of research. So laboratory research. So in laboratory research, the research methods are the study of random behavior and the hypothesis testing. Hypothesis means what? Here we can say the imaginative statement we have given for before performing any experiment. Okay. Then we call it as if it is correct, then it is with the or without the. Okay. Now the study of the random behavior comes with the technique of audio visual recording, observation. Okay, so we are finding out the random behavior. And in hypothesis testing, we will do some tests like pre-testing, post-testing, and measuring recordings. And in field research, there are various types of ways like we will do by the observations, interviews, and survey. Now, how to do the observation? We can do the checklist. That means we will go one-to-one at home. There are any person, one-to-one person. Their observational behavior scales are there, scorecards,
photographic, tape recording, interviews of distance observing, and photo voice. These are the techniques used for the observation. In interview, we can do the attitude scale, open and close questions, group response, and sociometric scale. So, what is an open and close question? So, open means what? If we will ask any question, so that question, the answer will give so many numerous questions to ask them. And whereas the closed question means what? If any question is asked to any person and the answer will uh, like it will never give you any chance to ask further questions. Okay, so these are the open and closed questions, group responses. Sociometric scales means what? We are doing any sort of technique. These are the technique where a social group is involved. Then survey, either you can do it from the telephone survey, telephonic survey, mail survey, email, fax, web. Okay, and in-house and self-administrated survey techniques are there. Okay, now the library research methods. Okay, now as we had said that here, these are what the topics. Okay, uh, of various methods. Okay, but and we have here synthesized a topic. We have find out one research topic. Now, before finding out a statement for the research topic, we have to do a lots of literature survey. Okay, and from where do we get the lots of literature survey, or we can say the review of this literature? So for that we have to go for the books, some scholarly journals, some publications, magazines. Okay, so let us see here one by one. So if you have stated any problem, okay, of your correlated subject, so either you can go for the scholarly journals. So there are some good sites in that. It is a Google Scholar, which will give you a number of papers related to your topic. Okay, and you can get the topics, the recent topics, the old ones, one of the oldest topics also you can get it from this journals. Okay, and which we can find out from the Google Scholar, or there are huge number of huge number of sites. Okay, that will give you the scholarly journals, that means relays, figures, so many. From you will get the articles also. Okay, then publications, some books are there, whose publications are also there, so you can get it from these various sites. You can summarize the issues of general audiences, magazines. Okay, then the newspaper you can get it, and the internet, which is known as a wide variety of information, and evaluate the website carefully. Okay, and as you know that the books is also one of the good source of getting the knowledge. Now let us hear the some 7 steps of the research process. Okay. Now the first one is to define the research problem. Okay. As we have said that we have to first find out the solution. This is one of the this is one of the most important topic, that to design a research problem. Now it should not be vague. It should not be big. Okay, it should be very concise one. It should not be used by any other one also. This should be it should be the newest of one. It should be novel. It should not be used by anyone. There are huge lists to find out this research problem. And after finding out, or after setting the research problem, we have to do a literature review by using n number of sources. And after doing the literature review, we have to find a gap. Gap means what? कि जो हमारा जो टॉपिक है, उसके पहले लोगों ने कितना उसके ऊपर काम कर चुके हैं, और हम आगे और कितना काम कर सकते हैं, यानी जहां तक उन लोगों ने वो काम छोड़ दिया है और उसके लिए कोई जगह छोड़ी है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर स्कोप. ठीक है, उस फ्यूचर स्कोप का यूज करके हम इसको और कहाँ अलग वे से लेके जा सकते हैं. दैट गैप इज नोन एज अ रिसर्च गैप. तो वो रिसर्च गैप आप लोग इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर से फाइंड आउट कर सकते हैं. Once you have reviewed the literature and find out the research gap, you can formulate the hypothesis. Okay. Now you can formulate the statement, imaginary statement.
Okay. Now, after preparing, then after that you have to design your research preparing. Then you have to collect the data, you have to analyze the data, and interpret and report writing. Okay. So these are the steps of the research process. So after analyzing, you can definitely say that the topic we have selected or we have formulated the hypothesis is correct or not. That can be done by using this data analysis. Okay. Now, here you can see the how to plan and how to data collect, and we will go to the final paper. Okay. Now, theoretical framework first we have to do it, then research subject selection, then method selection, and at the same time here the evidence selection is also done. After collecting the evidences or the data, we have to data collection instruments are also there. Then transcription of the interviews, data analyze, and after data analyze, we have to finalize the paper. Okay. Now, during this process, after finding out the whole conclusion, now we are going to write the paper. Now, before writing a paper, there is a research ethics is very important. Okay. Now, while writing the research ethics means what? If we have taken any topic from a paper which is already published in the name of an author, okay, and we are taking help of that paper and we are taking any topic from that paper and we are not giving a credit, okay, so it will be against of the ethics in research. Okay, so you always have to give a credit to that person from whom you have taken that topic. जैसे हमने कोई पेपर लिखा, पेपर में हमको लगता है कि ये उस पेपर में से कुछ टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बताया है कि कुछ फंडामेंटल थ्योरीज उन्होंने जो फाइंड आउट किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका हेल्प हमको, हमने उसका हेल्प लेके आगे हम कुछ काम करना चाहते हैं, राइट। तो अब ये तो हमको पता है कि हमने उनके टॉपिक में से, उनके पेपर में से ये टॉपिक लिया है, ठीक है, बट अगर हमने उनको क्रेडिट नहीं दिया है सो इट विल अगेंस्ट द research ethics. So it is very important for the researcher for committing the errors. तो हम ये error नहीं करना चाहिए. We always have to be very truthful to the, and we have to always show that कि हमने जो भी knowledge लिया है तो हमने इनसे लिया है. So it will promote the essential values that help the researcher working on the topic to have a common understanding of how the thing should go on. Now, since research may involve experts coming from the different fields of expertise, ethic binds them together for considering the important values such as the accountability, cooperation, coordination, mutual respect, and fairness among the others. So अब हम यहाँ पे कुछ भी ऐसे चुरा के हम लोग इसमें हमारे पेपर में नहीं डाल सकते हैं. This is against the research ethics. अगर हम लोग इसको बहुत ही फेयरली करते हैं तो देन इन फ्यूचर यू कैन ना, जैसे आपको ये पता है अभी तक हम लोग कैसे करते थे कि हमने हमारा पेपर लिखने के बाद हम हमारे गाइड से बहुत सारी चीजें पूछते थे कि ये बराबर है कि ये अगेंस्ट कैसे है. उसमें हो सकता था कि आपको कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उन्हीं से उनको ही आपको जाके पूछना पड़ता है. बट नाउ द आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट ग्लोबलाइजेशन हो गया तो जैसे हम लोग पूछते वर्ल्ड इज राउंड. तो अगर आपने आपका कुछ प्रॉब्लम जो है आपने उस साइट में भी डाल दिया तो देर आर ह्यूज पीपल रिसर्चर्स at the same time the professors, the guide, they will help you in your direction, so they will cooperate, they will coordinate. So if they will cooperate, you have to give them an accountability. अगर आपने कोई करेक्टराइजेशन भी कोई अलग इंस्ट्रूमेंट से किया है जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो आप कहीं और से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उन्होंने हेल्प किया है तो आपको उनको क्रेडिट देना मस्ट है, ठीक है. So this is what related to the ethical do's. Let us consider it. Maintain a precise record of your research activities. तो आपने कहाँ कहाँ से, जैसे हम लोग अगर मान लो कि पेपर बना रहे हैं तो उसके पहले हमने उससे रिलेटेड कौन से पेपर्स को यूज किया है उनका एक डेटा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है. Report your data in a most cautiously and objectively possibilities, and during your research on animals, trees,
treat them with the respect and care and empathy, those who are related with the biology and all, and respect all the intellectual property you use in the research and give them due credit in your research for their contribution. तो जो भी हमने उनसे लिया है उनको एक बहुत ही अच्छा क्रेडिट हमको देना है, and maintain the confidentiality whichever whenever necessary during the research. तो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे उनकी confidentiality maintain करना है तो आपको वो maintain करके रखना है. I think now let us hear about the research, publications and ethics. Okay, so here the figure is itself very self-explanatory. So let us consider here the no informed concept, duplicate submissions, then salmi slicing, no permission for data information uses, copyright infringement, image manipulation, data fabrication, plagiarism, data falsification, authorship issues, and conflicts of interest, non-disclosure of a safety procedure, and simultaneous submission. These are against the research and public ethics. Okay, this research, any researcher cannot have to do this type of things. See, let us consider if I have prepared any paper. Okay, so one should not have to do it. One should not have to submit it simultaneously. If I have prepared one paper, अब हमने एक journal में डाल दिया है, उसको communicate करने के लिए दे दिया है, right? We have not got any revision या फिर हमको उसका कोई आंसर नहीं मिला है, तो उसको साइमल्टेनियसली दूसरे जर्नल में नहीं डालना है. ठीक है, तो साइमल्टेनियस यानी आप एक ही पेपर को 3-4 जर्नल्स में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते. यू हैव टू वेट for one's response. If you are getting the good response, then of course it will be accepted. If it is not accepted, then it will be rejected. Then only you have to submit it to the other journal. Okay, then no informed consent, that means what, here you have not given any consent information to any people. यानी अगर आपने हमारे अपने जो भी related guides है उनसे कोई consent information नहीं दिया है. डुप्लीकेट सबमिशन यानी सेम पेपर आपने अलग अलग जगह में सबमिट किया है. ठीक है, देन सैलमी स्लाइसिंग यानी आपने क्या किया है, किसी एक पेपर में से छोटा सा टॉपिक कट करके सेम एज टू एज अपने इसमें पुट कर दिया है पेपर में. ओके, नो परमिशन फॉर डेटा और इंफॉर्मेशन यूज, आपने किसी डेटा को तो यूज कर लिया है बट उसका आपने परमिशन नहीं लिया है, वो आपको करना नहीं है. ठीक है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, अगर कोई चीज कॉपीराइटेड है और आपने उनका पायरेट करके यूज किया है तो इट विल अगेंस्ट द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. एंड इमेज मैनिपुलेशन, आपको कोई इमेज पेपर में से बहुत अच्छे से पसंद आया गया है, ठीक है, और आपको लगता है कि इट इज वेरी यूजफुल टू बी, तो आप एज इट इज उसको क्रॉप करके अपने पेपर में नहीं ले सकते. इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड. यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन डायग्राम और यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन इमेज. डेटा फैब्रिकेशन, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, आपने जो डेटा कोई पेपर में आपको मिलता है बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है, तो आपने उसके सेंटेंसेस को इधर उधर चेंज करके उसको फैब्रिकेट किया है, तो भी ये एक्सेप्टेड नहीं है. इट कैन इजीली बी डिटेक्टेड इन अ पेपर रिव्यूअर बाय द पेपर रिव्यूअर. ठीक है, तो उसको हम लोग डेटा फैब्रिकेशन कहते हैं. प्लेगियरिज्म इज लाइक अ थेफ्ट. ओके, प्लेजरिज्म इज लाइक अ थेफ्ट, आपने एज इट इज उसको यूज कर लिया, क्रेडिट नहीं दिया, तो वो इट इज लाइक आपने उनका कोई टॉपिक चुरा लिया है, दैट इज द प्लेजरिज्म. डेटा फॉल्सिफिकेशन यानी आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है, राइट, और डेटा कलेक्ट करने के बाद आपका डेटा का जो आउटकम है वो जिस तरह से आपको मिलना चाहिए उसका आउटपुट वैसे नहीं आ रहा है, इसलिए आपने क्या किया, डेटा को ही चेंज कर दिया, राइट. तो आपको उस टाइप का ग्राफ मिलने लगा, राइट. जो ग्राफ आपको चाहिए वो आने के लिए आपने डेटा के साथ छेड़खानी की, so that will what it is not, you are using the real data, you are not using, you are using the false data, and that is also comes under the data falsification. Again, regarding the authorship issues, okay, so if you have taken any help from the other people, so then you have to give them a authorship issues. Then there are certain other issues like conflicts of interest between the people,
and non-disclosure of the safety procedure. These are the another some ethics. So we must have to take care of all those things that should not be repeated in our paper, so that we will do research in a very proper way. Okay. So I hope these are what these we have already explained the types of descriptive method and all, and we are running very short of time. I think it is 7:50, right? So any one of you have any questions? These are what the steps of this roadmap. So I'll just go through this roadmap of our research. So first we have to select the problem, then select the research topic, and we have to find out the research gap. And that can be found out by using the literature review from the various well-known journals. And then we have to plan for the experimental work or data collection. Then we have to go for the research paper publication, final thesis, राइटिंग ना। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें मैं आपको थोड़ा मेंशन करना चाहूंगी कि जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो कभी शुरू करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए मैं बहुत बड़ी चीज आपको एक बता दूं कि रिसर्च राइटिंग यानी जो थीसिस है, इट कैन नॉट बी डन इन वन डे, इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क। ठीक है, तो आपके पास एक 5 साल का एक ड्यूरेशन है, 3 साल से 5 साल का एक ड्यूरेशन है जिसमें आपको आपका पूरा वर्क कंप्लीट करना है, राइट? So thesis writing is very difficult task. So you have to start it from the day one. Okay. तो आपने डे 1 से प्लानिंग करना है। जैसे आपको ये पता है कि हमारा जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डेटा आपको लगता है, आपने उसके बेसिक नोट्स बना लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर इन माय टॉपिक लिमिनेसेंस, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल फाइंड आउट व्हाट इज लिमिनेसेंस, पहले तो वो मैं देखूंगी। ठीक है, उसके बाद उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, अब उन टाइप्स में से हम कौन सा यूज करने वाले हैं, राइट? अब उसमें हमारा गैप क्या है वो हम स्टेट करेंगे। फिर हम उससे हम कहाँ और उसको लेके जा रहे हैं कि उसके बाद हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। ठीक है, फिर हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड हमने क्या क्या पेपर प्रेजेंट किए हैं। हाँ, अब इसमें आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज एक बार बता दो कि थीसिस राइटिंग में जिन लोगों के जितने पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, दे आर द वन ऑफ द लेसन्स और वी कैन से द टॉपिक फ्रॉम योर थीसिस। तो जैसे जैसे आपके पेपर्स पब्लिश होते जाते हैं, तो उसके साथ साथ आपका एक एक दो दो लेसन भी उसके साथ साथ आपका बन जाता है, राइट? ठीक है, फिर आप उसको एक कंक्लूजन में लाना है। जो भी आपने पूरा वर्क किया है 5 इयर्स तक, 6 इयर्स तक, जो भी आपने एक वर्क किया है उसको एक कंक्लूजन में लाके रखना है। ठीक है, so to find out the conclusion is one of the important tasks, and after this we have to submit this thesis and we have to go for the open defense. Okay, so this is what the whole roadmap for this during the PhD. Okay, so as I have already explained this everything, so what are the steps for the research? So we have to select a topic, define the research problem, review of the literature can be done by the ICT, Show the Ganga, okay, and all various Google scholars, then dx dot doi करके यहाँ पे एक साइट है जिसमें आप DOI नंबर आपने अगर पुट किया तो भी आपको एक बहुत ही अच्छा से उस पेपर्स जो भी पेपर आपको जरूरत है वो पेपर वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। To identify the variable and to formulate the hypothesis, prepare the research design, carrying out the samples, collect data, and perform data analysis and hypothesis testing, carrying out the generalization and the interpretation, and writing the research report. ठीक है, ये बहुत ही important है। जो हमने पूरे इतने हमारे ड्यूरिंग जर्नी में जितना भी हमने काम किया है उसका एक रिसर्च रिपोर्ट फाइंड आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। And thank you so much everyone. So am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. Yes, madam. So those who have any query they can ask.
Mori sir. Yes, sir. I think no any query from participants. Should go ahead, sir. If there is no query, then you can proceed further. Hello. Yes, sir, go for a vote of thanks, sir. Okay, sir. Hello, everyone. Hello. I am Yes, audible. sir. Yes, yes, sir. You are audible. Hello, everyone. I am K. More, Assistant Professor, Department of Chemistry, here to propose a vote of thanks. Today, just we have completed the second session of NET set workshop on research and teaching aptitude delivered by uh, SM Kshetrapal ma'am. First, I would like to thanks our principal, Dr. S.K. Navin sir, for continuous guidance and moral support. I would like to thanks SM Kshetrapal ma'am for giving his precious time and delivering such a motivational talk on preparation of NET set examination, because the set exam is coming soon in the same month. Ma'am specially highlighted the basic research advance, basic research advance, exploratory research with a suitable example, and the difference between the exploratory and descriptive research, purpose of historical research, publication ethics, etc. Also, I would like to thank Dr. N.V. Gandhare, sir, coordinator MSc Chemistry, for providing us such a platform for organizing wonderful events. I would like to thank Dr. Adil Jiwani, sir, for their technical support. Lastly, I would like to thank all the participants for participating and listening carefully. With the permission of honorable dignitaries, I would like to conclude the vote of thanks here. Today's session is over here. Thank you, all of you. Supriya madam, thank you. Thank you so much, madam. Thank you, ma'am. Thank you so much for giving me such a platform, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay. Thanks So to shall I all. take the lead, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. Thanks to all participants.